Hi everyone, I'm Meenal. Welcome back to my channel and a very warm welcome to another vlog. आज है 24th of December. That means आज है क्रिसमस ईव. आज का दिन वैसे ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई लव क्रिसमस एनी विच वेज. किसको क्रिसमस नहीं पसंद है, बट आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिसमस सिंस द वेरी बिगनिंग. मुझे बहुत ज़्यादा शौक था क्रिसमस का. एंड नाउ दैट आई हैव किड्स, ऑल द मोर रीज़न टू सेलिब्रेट इट. So I thought that I'll make a whole separate Christmas vlog. Can you wait? Yeah, I'm taking a photo. Can you wait outside? Okay. I'm coming. Wow, nails. Go. Daddy, Dada, Mommy, nails. Yeah, you Mommy, go. nails. Yes, I'll get it for you. Okay. I'm getting it for you. Go. So मैंने सोचा कि क्रिसमस व्लॉग बनाना बहुत अच्छा होगा. बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा है. एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड ज़रूर करके रखे थे. फॉर सम रीज़न और दी अदर मैं एडिट नहीं कर पाई, हेंस मैं अपलोड नहीं कर पाई. पर मैंने सोचा क्रिसमस का व्लॉग तो बनता है. हाँ, आई एम नॉट टेकिंग योर फोटो, रिलैक्स. सो 3-4 दिन से किमारे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड द ओनली मोटिवेशन शी हैड टू गेट वेल वॉज क्रिसमस इज़ कमिंग. सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. तो मैंने सोचा कि चलो क्रिसमस ईव भी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं. It is for you only. I'm getting it for you. Basically, Christmas Eve celebrate करने का plan ये है कि I'll give like small hampers to both the kids as Christmas. Hey, hello, go. I'm getting it for you. It's a gift. पहले ही ले जाओगे, हैं? तो बेसिकली क्रिसमस ईव का सेलिब्रेशन का प्लान ये है कि मैंने छोटे छोटे हैम्पर्स बनाए हैं विच इज़ कॉल्ड एज क्रिसमस ईव बॉक्स, जो हम बेटा देते हैं, जो ऑलरेडी मायरा रेड करना चालू हो गई है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो मेड लाइक अ हॉट चॉकलेट एंड स्मोर्स with gingerbread cookie counter and we'll watch some Disney movie and we'll have some pizza and all. Obviously मैं घर पे बनाऊंगी because Kimaira is not well, तो हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करना अवॉइड कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि whenever you talk about Christmas, हर बच्चे के लिए सबसे पहले ट्यूबलाइट ये जलती कि क्रिसमस है, मतलब गिफ्ट है. तो क्रिसमस ईव पे जो गिफ्ट होना ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक्साइटेड होंगे कि क्रिसमस है तो गिफ्ट नहीं दिया. हाँ बेबी, देते हैं अभी आपको. तो क्रिसमस ईव के लिए मैंने 2 अलग अलग छोटे छोटे गिफ्ट्स बना लिए और जो क्रिसमस के गिफ्ट्स हैं वो उनको ऑब्वियसली कल सुबह ही मिलेंगे. मैंने बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपकेक और ट्रफल्स भी ऑर्डर किए हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी. अभी मायरा सब कुछ गायब कर दे उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस बॉक्स में एक्चुअली है क्या क्या. सो दिस इज़ किमायरा के लिए क्रिसमस ईव बॉक्स. इसमें एक बहुत ही क्यूट क्रिसमसी रॉम्पर है जो हम लोग अभी पहनेंगे एंड वील टेक फोटोज़. एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स है. ये एक्चुअली ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा लास्ट मिनट था, तो मुझे जो भी मिला असेंबल मैंने कर लिया. सम choco bakes by Cadbury, a small little toy and some toothbrush. I just didn't know what to get, so I just, and there's a very beautiful snowman card जो actually Kimaira की school activity में ही था. So this is all about Kimaira's Christmas Eve box. मायरा के लिए almost same है. This is this choco bake, this chocolate hamper, this very cute again Christmassy romper, and a toothbrush. I don't know why I've added a toothbrush, but मैंने सोचा sweets के साथ थोड़ा toothbrush भी add कर लेते हैं. And this actually Kimaira has 2 different sets of Chelsea dolls and they love it. I didn't know if Myra would like it. She did, so I got one for her. And it also has this जो Myra लेके गई. This is also what Kimaira made for her school activity. And of course दोनों बच्चों के लिए है तो मैं I will not forget Karan. So I have this very cute hamper which I got from H&M for him, and I've also this like pajamas, so like I made a DIY night dress kind of a thing for him. I also have this chocolate hamper and I have some things that he loves. One is Cadbury chocolate, one is Kit Kat, and I have aloe gel because so that is that for the hamper. So सबसे पहले हम लोग अपनी क्रिसमस ईव की शुरुआत करते हैं. ये हैम्पर्स उनको देते हैं. I'll take a photo. आप तैयार तो हो जाओ हैं. I myself. Who's gonna say thank you? No. Yeah, I'll not forget you. I am supposed to. It's okay. Mommy. Look what is it there. Mommy. One second. Very nice. Then
I'll take your bird. It's that. Fun. See what I got for you. Aloe gel. Because you love it, na? Yes. I hope it's nice. I hope it's nice. We have tried everything. अभी यही brand बचा था मेरे ये. So apart from that, जो मैंने s'mores counter बनाया वो मैंने यहाँ dining table पे बनाया. Let me show it to you. So this is where the cupcakes and the truffle will come. ये छोटा सा candle यहाँ पे मैंने करा है. We have some marshmallows, we have crackers, chocolate अंदर है, we have hot chocolate, cups और ये to warm up the marshmallows. I hope candle वाला thing works. Last moment में मुझसे सिर्फ ये ही हुआ. I also have gingerbread cookies. Where are the gingerbread cookies which I have to open? I have 2 of these. So Myra, you can see what Myra she took that one because fuck am Myra because she asked me to get it. Easy. I'm gonna keep it down. We're gonna play it, share it together. Okay. Okay, It's a that's- lipstick. Oh, you got a lipstick? Okay. And we got a ring. We have a ring. I want the heart one. See, we have a blue ring and a red ring. I want the heart one. Can you show me your finger? Can I like this? Huh? Dad, can I have the red one? Dad, can I have the red one? Yeah, we can. Like this. Mom, you can have the blue one. Here you go. Now I'll have the red one. Thank you. Show me your finger. Nice. Yeah, that's so pretty. What the color is? And Myra, some perfume. Hands up. Wow. Very nice. You like it? Yeah. Myra, you like The it? color is blue. Do you like it? This one. Blue comb, yes. Nice. Can we come in? You are already in, Baba. Medium. अभी मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चों का मूड अच्छा है और दे आर ऑल लाइक नाइसली ड्रेस्ड मैं फटाफट उनके कुछ अच्छे से फ़ोटो खींच लेती हूँ. हाँ गिफ्ट्स you'll get in the morning, Baba. Yeah, but can I open them now? No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Ring the roses, punk for the gold. Show you down. Hey. Okay. So currently the time is 8:30. और मैंने सोचा कि पहले तो बेसिकली अभी 2 प्रोग्राम है. फिर विल हैव सम डिनर, विल वॉच मूवीज विद पॉपकॉर्न एंड वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ कपकेक्स एंड ट्रफल्स. So that is the plan. Also एक बहुत स्पेशल प्लान है which is hot chocolate with s'mores which I'm gonna do. But then वो मैं सोचा कि पहले मैं बच्चों को डिनर करा देती हूँ and उसके बाद dessert and then at night if we are up for a longer time we can do s'mores and hot chocolate. So yeah, अभी तो वही प्लान है. फ़िलहाल I am making pizza for the kids. For me and Karan, either I'll make burgers or I'll have like chicken sausage pizza. Let's see. I'll have popcorn. Popcorn you can have it movie na. I'll have only popcorn. I don't want pizza. Myra. Okay. I got something for you guys. Is it cake? Yummy. Yummy cupcake. Photo Yummy happy. Yummy. Daddy, cupcake. Yeah. You like it? No. You don't want to have it, Kimpi? Yeah. Which one? I just wanted water. Oh, okay. Mommy, Apart from the cupcakes, we also have this. cupcake? But I'm thinking that I should keep this for morning or for tomorrow. Let's see. Kimpi.
Try it. Both hands. Try it. Also, I wish you all a very happy, merry Christmas. आई होप आप लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा जाए. आई होप आने वाला नया साल आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए. तो टाइम इज़ ऑलमोस्ट लाइक 11:30. I'm gonna wrap up my kids' day because obviously किमारी की तबीयत जस्ट रिकवर हुई है, so I don't want her to be up for a longer time. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनको जल्दी इसलिए सुलाना है बिकॉज मुझको उनके गिफ्ट रैप करने हैं. जो वो सुबह उठेंगे तो दिल फाइंड अंडर द क्रिसमस ट्री. सो दैट्स दैट. टुडे इज़ क्रिसमस. मतलब आज है 25th of December. आज है क्रिसमस. 9:30 हो रहे हैं. एक बहुत छोटी सी गड़बड़ हो गई है. आई वॉज सपोज टू पैक गिफ्ट्स फॉर द किड्स, बट कल रात को मेरे को सोते सोते आई स्लेप्ट एट 4 in the morning. एंड मैंने सोचा मैं सुबह उठ के कर दूँगी और लेट हो गया, प्रॉब्लम होगी. दोनों बच्चे उठ चुके हैं. सुबह फटाक से बच्चों को करण के पास छोड़ के आई हूँ और मैं क्विकली गिफ्ट रैप करूँगी. मैंने किमारा को बोला है दैट आई एम मेकिंग सम हॉट चॉकलेट एंड कीपिंग सम जिंजर ब्रेड कुकीज़ फॉर यू आउटसाइड. सो शी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड. वो अंदर बहुत ईगरली वेट कर रही कि ट्री के नीचे क्या है. फ़िलहाल ट्री के नीचे कुछ नहीं है. सो आई क्विकली or wrap all the gifts, Karan ki gift, बच्चों की gift, everything. I'm gonna just set up here and then I'm gonna call the kids outside. So I've quickly placed all the gifts here. Karan का तो मैंने gift pack भी नहीं किया because बच्चे बहुत ज़्यादा eager हो रहे हैं. मेरा gift I already know what Karan is getting me, so that's also I've not packed. बच्चों का मैंने somehow और कुछ पैक कर दिया है, कुछ नहीं किया. And also यहाँ पे I have placed gingerbread cookies and some Christmas brownies and hot chocolate with marshmallows. And now it's time to call the kids. Mayur, come, jaldi आओ. Eating gingerbread. Tree. Under the tree. Yeah. Say yeah. Like it? Do you want to open the presents now? Yeah. You can now open it. This is for Dida. Give it to Dida. That's for Myra. Daddy, look at my toy. Open her toy. Open. What is that? Look. Okay. What's that inside? What's that? What is that? Sorry, I couldn't pack it. Santa couldn't pack. Ooh. Yay! So the time is 12 o'clock right now. We just had coffee and we had our... Follow me. I'm not taking your photo, man. Idea. What's the idea? Tell me. So पहले हम लोगों ने प्लान किया था that we'll go out somewhere for Christmas, but किमारा वापस थोड़ी सी गर्म हो रही है, so I don't want to risk it. We'll order something. We'll watch Frozen because that is our favorite movie. Like me, Kimaira, and Myra, we all love it. Karan, I don't know, he just hangs around, but he has to. He has no option. और Myra new toys में busy है, so now is the time when I get the time to read all my new books. Talking about my Christmas present, I was very specific this year what I wanted. I asked Karan that I want good books, and I also told him which one I wanted, because there's no point. Books अगर आप किसी को देते तो you have to know what the person wants. Otherwise, it's a waste because the person won't read it. I was such a good reader. Like when I was in college, I used to read
and a number of books, and it was such a good phase of my life that I used to love reading books. And nowadays I'm feeling that, you know, because of the social media and scrolling through the phone all day or watching TV, I am losing that, and I don't want to lose it, because that is something which is so beautiful. If you read a book and if you have a knack for it, you would know that is something so precious and important that you don't want to lose. So I'm going to develop it again. So I've got like really good books, and I want to start reading them again, and I want to be a rigorous reader like I was before. And this new year actually I want to be more into reading books, because it's the best thing that you can do to yourself, by the way. So that is all for today. I hope you enjoyed a mini Christmas vlog. If you did, do not forget to subscribe to the channel and like this video. Also hit the bell icon, so जब मैं नया video upload करूँगी तो आपको notification आएगा. So that is all for today. I will see you in my next vlog. Till then, be grateful and don't forget to count your blessings.